Welcome to my dear students and a congratulations to everyone. Wish you Lord's eye look to you in every moment, in every day. So today I am now going to start a new chapter which name is measures of dispersion. It is a part of statistics. It is a second part of statistics. The first part of statistics is the measures of a central tendency, and the second part is the measures of a dispersion. So the word dispersion in literally means deviation, difference, or spread over a certain value from their central value in a statistical series. In other sense, we can say the measures of dispersion we mean the extreme two values in a statistical series. Or the difference between any two extreme value of a series is called measures of dispersion. So this part is very simple and it has no to account multiplication, division or a square root or any mathematical solution. So measures of dispersion in the sense we can identify if any values are given in ascending or descending order or in horizontal or vertical form. At first we have to identify the two extreme values. Two extreme values means the smallest value and the largest value. So the difference between the smallest value and the largest value indicates the range or a part of a dispersion. So measures of dispersions can be classified in two basic heads. The measures of dispersion by the method of limits, dispersion by the method of computation, and a dispersion by the method of graphs. So the dispersion methods of a limit, in this case we have to find out the difference between the two values, the smallest value and the largest value. So the methods of limit can be subdivided into different heads such as range, interquartile range, semi-interquartile range or quartile deviation, percentile range, decile range. It is called the method of limits. Then method of computation
It includes mean deviation, standard deviation, mean deviation, standard deviation, coefficient of variation and variance. Then method of a graph, it includes the Lorentz curve. The Lorentz curve is a method of a graph. So at first we have to discuss dispersion by the method of limits. The first part is the range. तेणु रेंज तो आम डिस्कसन करबा. एट फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ रेंज. ना रेंज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट आइटम एंड द स्मॉलेस्ट आइटम. इट इज कॉल्ड रेंज. जदि लार्जेस्ट आइटम को आम एल बोली नबा एवं स्मॉलेस्ट आइटम को आम एस बोली नबा, सो दैट रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस. सेमती इंटर क्वार्टाइल रेंज से रेंज है आम प्रथम कथा बुझिले जे लार्जेस्ट आइटम आउ स्मॉलेस्ट आइटम रो डिफरेंस टा होची रेंज. सेमती इंटर क्वार्टाइल रेंज. देन एट फर्स्ट वी हैव टू नो मीनिंग ऑफ अ क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मीन्स द वेरिएबल्स इन ए सीरीज डिवाइडेड इनटू 4 equal parts and each part is called a quartile. So it is symbolically written as a Q. So Q1 is called a first quartile and Q3 is called a third quartile. तेम जदि इंटर क्वार्टाइल रेंज आम बाहर करबा ताले इंटर क्वार्टाइल रेंज in symbolically written as IQR. So IQR is equal to Q3 minus Q1. सेमती सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन Q3 minus Q1 होल डिवाइडेड बाय 2. सेमती डिसाइल रेंज कथा जदि आम डिस्कशन करबा, सेमती डिसाइल कहले हम कौन बुझा. सेमती द वैल्यूज इन ए स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड डिसाइल. सेमती द फर्स्ट डिसाइल एंड द लास्ट डिसाइल इट इज टेकन एज ए D1 एंड ए D9. So decile range is equal to D9 minus of D1. सेमती percentile range. Percentile range. Then what is percentile range? Simply the variables in a statistical series is divided into 100 equal parts. Each part is called a percentile. So the percentile range is equal to P90 minus of P10. That is equal to percentile range. यह को हम कहले dispersion by the method of limits. सेमती dispersion by the method of computation आधर कौन रहा ना मीन डेविएशन रहा. सेमती मीन डेविएशन which is symbolically written as MD. But today I am now going to start all the formulas regarding measures of dispersion. ये dispersion संबंधित जितने सब फॉर्मूला अच्छे आज हम डिस्कशन कर दें. काली सोटा सब मीनिंग रे सब बुझेगी. सेमती मीन डेविएशन जदि हमें कहबा which is symbolically written as MD.
So the mean deviation can be calculated with the help of individual series, with the help of discrete series, and with the help of continuous series. जदि मीन डेविएशन में तार कैलकुलेशन करिबा इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटीन्यूअस सीरीज हो, तेणु मीन डेविएशन कैलकुलेशन होची से कहतो कैलकुलेट मीन डेविएशन बाय अप्लाइंग मीन और मीडियन और मोड। तेणु जेकोसी भैल्यू जदि इंडिविजुअल सीरीज देता हूँ, डिस्क्रीट सीरीज देता हूँ कि कंटिन्यूअस सीरीज देता हूँ, तेणु से वेरिएबल्स रु जदि कही तो मीन डेविएशन बाय अप्लाइंग मीन तने प्रथमे आमको वी हैव टू फाइंड आउट मीन आइदर इन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तेणु जो मीन बाहर करवा एवं से मीन को डेविएशन करवा फ्रॉम ईच वेरिएबल्स ऑफ गिवन वेरिएबल्स। तेणु जो वेरिएबल्स देछि से वेरिएबल रु आम मीन को बाहर कर तो मीन बाहर कले से मीन अमाउंट को बा मीन को प्रत्येक वेरिएबल डिवाइड करवा बा सबट्रैक्ट करवा एवं सबट्रैक्ट कले तादर किछि वैल्यू बा वैल्यूज आसीबो प्लस आसीबो और किछि वैल्यूज माइनस आसीबे कि जीरो भी गोटे वैल्यू भी जीरो हो पारे। तेणु आम को वी हैव टू इग्नोर प्लस और माइनस। तेणु आमको बर्तमान प्लस कि माइनस किसी लिखानी पूरा डायरेक्टली आम से खाली से वैल्यू गुड़िक शो करिया। तेणु कही जदि मीन आम मीन वैल्यूटा को आम प्रत्येक वेरिएबल सबट्रैक्ट करवा तेणु सबट्रैक्शन जो रिजल्ट बा आउटपुटा जो बाहर से आउटपुटा को विदाउट शोइंग प्लस और माइनस लिखा इंडिविजुअल सीरीज तेले। तेणु से आइटम गुड़ाक आम डी नवा एवं मीन डेविएशन हम मीन डेविएशन बाय एम डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी बा समेशन मॉड ऑफ डी। तेणु बता डी पाइले तेणु तार मॉड बा एब्सोल्यूट वैल्यू जदि हम शो करवा तेणु प्लस माइनस टाक इग्नोर करवा। तेणु समेशन मॉड ऑफ डी बाय एन जदि डिस्क्रीट सीरीज थब समेशन एफ मॉड ऑफ डी बाय समेशन एफ। सेमती कंटिन्यूअस सीरीज थी ताले हम सेमती लिखा समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सेमती कही कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ताले आम बर्तमान कौन करिया ना जो क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन एटलास्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। से मीडियन वैल्यू को प्रत्येक वेरिएबल हम कौन करिया सबट्रैक्ट करवा एवं सबट्रैक्ट कर सारा पर तार एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा तार प्लस माइनस किसी लिखा नहीं डी बोली आइडेंटिफाई करवा। से जो आम पूर्व जो फर्मुला पकड़ते इंडिविजुअल सीरीज समेशन मॉड ऑफ डी बाय एन डिस्क्रीट समेशन एफ मॉड ऑफ डी बाय समेशन एफ कंटिन्यूअस समेशन एफ मॉड ऑफ डी बाय एन। सेमती मोड देते मतलब मोड आम जब मोड वैल्यू बाहर करवा सबट्रैक्ट करा मीन डेविएशन। सेमती स्टैंडर्डाइजेशन कथा जब आम चिंता करवा ताले तार मध्य से स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ 3 series इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। Standardization can be symbolically written as SD or omega। आपको SD बदी लिखि परिबो किबा एटा लिखि परिबो एटा होती इट इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तेनु इंडिविजुअल सीरीज रे हमें स्टैंडर्डाइजेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन होल स्क्वायर। तार सेमती इंडिविजुअल सीरीज देथिबो तो आमे कौन करे आमे
ଆଜୁଡ୍ ମିନ୍ ଗୋଟେ ନେବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମିନ୍ ନେବା ଏବଂ ସେ ଆଜୁଡ୍ ମିନ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ରୁ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ଡି ବୋଲି ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା, ତାର ସमेସନ୍ ଡି ବାହାର କରିବା, ସमेସନ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା, ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ସେମିତି ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିରିଜ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବ we can apply ସେମିତି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେବ ସमेସନ୍ ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସमेସନ୍ ଏଫ୍ ମାଇନସ୍ ସमेସନ୍ ଏଫ୍ ଡି ବାଇ ସमेସନ୍ ଏଫ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସିରିଜ୍ ଗୁলো ସେଇଭଳି ସୂତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ କଥା ଆସିଲା। ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ যে root of standard deviation. Root of standard deviation is called variance. तापर आसला variation. तेन coefficient of variation वाला standard deviation by mean into 100. Since variance is equal to the square of standard deviation, or standard deviation is equal to square root of variance. So I have given some of the formulas: range, interpolated range, quartile deviation, decile range, percentile range, mean deviation, standard deviation, coefficient of variation, and variance. But nowadays, so measures of dispersions can be classified into three basic heads that I have given, but it can be in other form, it can be divided into two basic heads. What are they? Now one is positional dispersion, another is mathematical dispersion. So the positional dispersion, it includes the first part, but जब हमें first part लिखिए methods of limits. It includes the methods of limits and its coefficient. जदि रेंज कहवा कोएफिशिएंट रेंज बाहर तेणु रेंज होची l माइनस s, तेणु कोएफिशिएंट रेंज है l माइनस s बाय l प्लस s. तेणु इंटरकोटाइल रेंज है q3 माइनस q1, सेमती तार कोएफिशिएंट हो q3 माइनस q1 डिवाइडेड बाय q3 प्लस q1. सेमती डिसाइल रेंज है d9 माइनस d1, सेमती कोएफिशिएंट हो d9 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d9 प्लस d1. सेमती परसेंटेज रेंज है p90 माइनस p10, सेमती कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटेज रेंज है p90 माइनस p10 डिवाइडेड बाय p90 प्लस p10 है परसेंटेज रेंज. तेणु ये जो रेंज by method of limits and its coefficient नहीं है positional dispersion. से mathematical dispersion वाला जो dispersion by the method of computation and dispersion by the method of graph, ये दीटा नहीं mathematical dispersion. So I have given regarding all the formulas, measures of dispersions. Then the next day I will discuss all the items, the meaning of each part, and also if necessary I have also given a question with solution. Thanks to all.